Hi guys, I just woke up and it's 2nd February. इंडिया में आज सरस्वती पूजा है तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई and today it's a special day. The reason is that I'm gonna cook Indian food for my friends, which includes Indian friends and foreigner friends as well. So I'm gonna cook for them and they are coming and we gonna have a sort of little party भी नहीं बोलेंगे, games खेलेंगे, मस्ती करेंगे. So yeah, I'm gonna show how my day, not literally day, but how the party thing goes. Okay, so yeah, stay tuned. So this is not for guest exactly, पर आज सरस्वती पूजा है जैसे मैंने बोला तो I made Bengali खिचड़ी. तो सुबह सुबह मैंने मम्मी को फ़ोन किया एंड परेशान कर दिया कि मम्मी खिचड़ी कैसे बनाते हैं जल्दी बताओ. एंड मैंने पकौड़े की भी तैयारी कर ली है. मैंने सुबह को नॉट पाव भाजी, मैंने भाजी बना ली थी तो वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है. तो जब मेरे गेस्ट आ जाएंगे तो फिर मैं उसको रीहीट करके, यहाँ पे पाव नहीं मिलता तो वो ब्रेड के साथ ही खाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं सर्व करूँगी. एंड मैंने साथ में अभी स्टार्टर के लिए मैंने आलू के पकौड़े रखे हैं एंड विथ हरी चटनी. आई मेड हरी चटनी एंड चाय. आई एम गोना शो यू गाइस. अभी मेरे को चेंज भी करना है क्योंकि मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस में अपना थीम रख दिया था रेड, तो मुझे खुद भी चेंज करना पड़ेगा. सो आई एम गोना गो एंड चेंज नाउ. थोड़ा सा इज्जतदार बन जाऊँ एंड थोड़ा सा क्लीन करूँगी रूम को, मतलब थोड़ा डेकोरेट करूँगी एंड फिर आई विल वेट फॉर माई गेस्ट टू अराइव. ये मैंने ऐसे बैठने का बना दिया है एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रे जो उनको ईजी पड़ेगा, ईजी एक्सेस वाली चीज़ है. एंड यहाँ पे पानी का इंतज़ाम एंड आई कांट वेट फॉर देम टू कम. भाई साहब, अब समझ में आ रहा है अपनी पार्टी में मम्मियाँ तैयार क्यों नहीं होती थी. मतलब लगता था कि उन्हीं की पार्टी वही क्यों नहीं तैयार हो रही है. आज फीलिंग आ गई भाई, आज समझ में आ गया. सो long. खुशी मानी 10 hearts. Tisha Wani. मानी योगी 10 hearts. 10 diamonds. मैं नहीं हूँ, इसको बोल. Ani. Look at the difference. वो तो क्या? 나는 영어. Sing a song in your mother tongue. Wow. 英語って。扉の先には何があるかわからないけど誰かが気づいてるからExperience once in a lifetime opportunity. You know, like outside and in the streets, there is sometimes where the sun is too bright, right? And instead of hats or like common, like what people commonly wear, I came to introduce you the best object to cover your head from rain and the sun and everything you can imagine. Are you ready? Yes. I'm introducing you, and I have many for you. Like you if you want it, I can sell one for you.
띵띵띵띵띵 띵띵띵띵띵 괜찮아 띵띵띵띵띵 띵띵띵띵띵 괜찮아 띵띵띵띵띵 띵띵띵띵 괜찮아 띵띵띵띵띵 띵띵띵띵 괜찮아 띵띵띵띵띵 띵띵띵띵 괜찮아. So the day ended and we had a lot of fun. हमने बहुत मस्ती की, हमने रील्स भी बनाए एंड रील्स मैं पोस्ट पे करूँगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो क्योंकि मैं काफ़ी रील्स बनाती हूँ. एंड येस द डे वाज फन एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव सच फ्रेंड्स कि मेरा दिन अच्छे से गुजर जाता है. मुझे यहाँ पे आए हुए भी दिस इज़ माई 6th मंथ, लाइक 5 महीने ख़त्म हो गए, ये मेरा 6ठा महीना है. अभी मैंने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बना लिए हैं एंड आई एम ग्लैड एंड आई होप दैट आई एम गोना स्टे फ्रेंड्स विद देम फॉर एवर. येस, आई बिलीव इन फॉर एवर फ्रेंडशिप्स. एंड या गाइज, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि कोरिया में आके आप अकेले पड़ जाओगे, ऐसा नहीं है. सब अपना फैमिली छोड़ के आते हैं, तो स्पेशली और कोई नहीं तो आप फॉरेनर्स के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप कर सकते हो बिकॉज दे विल फील द सेम वे दैट वी फील, दैट हाउ वी फील. एंड आई एम ग्लैड दैट बीइंग इन यंगनाम आई ऑल्सो गॉट टू नो मैनी इंडियंस, सो इट्स ईजियर फॉर मी, यू नो, कंपेरेटिवली टू other countries people. Yeah, so that was all. I'm gonna add a few here and there clips क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा busy थी मस्ती करने में and to live in the moment, so I couldn't record much. And yeah, I just wanted to show the glimpse of how a fun day looks. Yeah, so bye. See you in my next video. Bye bye.